Fine. Now we'll start with the second part of the workshop where we are finding out how to increase the speed. ठीक है, पहला part was the test, just to test where you stand. So all of us around 200, 150 to 200 के बीच में, which is the average reader. So obviously you have just started your preparation for the exam, so अभी तुम्हारा speed average ही होगा, ज़्यादा speed नहीं आएगा. It will take some time. ठीक है. So let's start with the first paragraph. This is the same paragraph we read earlier. तो starting में हमने एक paragraph देखा था. This is again taken from the book only. Fine. So these are the 6 strategies which I'll talk one by one on how to improve that. ठीक है. Can you read this thing? A E I O U, A E I O U, A E I O U. Fine. And ये वाला 1 2 3 4 9. Fine. This is a very very common problem कि everyone reads by their mouth. तुमने भी मैं देख रहा था काफ़ी लोग साथ में उनके होंठ हिल रहे थे. यू आर रीडिंग, यू आर स्पीकिंग वाइल यू आर सेइंग. इसको तुम बिना बोले सोचो और बोलो. इट टेक यू 10 टाइम मोर टाइम. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अगर सिर्फ पढ़ना हो या साथ में बोलना हो, इट टेक यू एटलीस्ट 5 टाइम मोर टाइम. राइट. सो दिस इज अ वन कॉमन मिस्टेक पीपल डू. दे वोकलाइज, दे स्पीक वाइल दे आर रीडिंग. If you are reading and speaking, which we normally do in our day-to-day language, in our day-to-day life, then you are reducing your speed by 5 times. समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? Whenever you read, you also speak. मन में बोलते हो, बोल के बोलते हो, जैसे ही बोलते हो, but you are speaking. Fine. So first task is stop reading. Stop speaking. ठीक है? So I will give you one more passage now. Try to read the first paragraph in your mind. Don't speak. सिर्फ समझो, बोलो मत. फाइन. फाइन. सो आई हैव टोल्ड यू टू रीड, नॉट टू स्पीक. हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्पोकन दिस थिंग इन योर माइंड? ऑलमोस्ट 60% ऑफ द क्लास इज स्पीकिंग इट आउट. ठीक है. नाउ रीट्रैक दिस वर्ड. इफ यू जस्ट रीड दिस थिंग, जस्ट ब्राउज थ्रू दैट, यू हैव टेकन 1/5 ऑफ द टाइम. बिकॉज द वर्ड ऐसे A E I O U. तो व्हाट वी आर डूइंग, वी नॉर्मली स्पीक in our mind, obviously not speak loudly, but in our mind. 60% of you are doing that. Same for 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तुम अगर ये समझोगे, is much more easier than speaking. Fine. So it's very normal. 50% of 60% of Indians especially, we speak when we read. So you are reducing your speed like anything. These are the worst case example obviously. इसमें obviously you have to take time to read. Otherwise words में कम time लगता है, लेकिन your speed become double अगर तुम ना बोलो. So first part of my strategy says कि बोलना बंद कर दो. तुमने खुद ही बोला है 50% of you are speaking while reading. Fine. So next paragraph when it comes, please don't speak. चुपचाप समझो, बोलो मत. Alright, so just read the first couple of lines without speaking in your mind. बाकी छोड़ दो. Just the first 2-3 lines. मन में पढ़ो बस, बोलो मत. Understand the difference between reading and speaking. So that is number one error which everyone does. ये ऐसा नहीं कि तुम गलत कर रहे हो, बिल्कुल ठीक, क्योंकि हम बचपन से ऐसे ही करते हैं. You will always reading and speaking the words in your mind. Stop speaking. Not come overnight, फिर टाइम लगेगा, but आएगा, धीरे धीरे आएगा. ठीक है. Yep, so in this class almost 40% of you were already reading always speaking while reading the topic. So that's the thing I want to stop. And these are common for everyone. ऐसा नहीं कि तुम अलग हो या तुम गलत हो, तो सब करते हैं, but you have to avoid this from going forward. Fine. So your objective is आज के बाद every day you are doing 1 hour. Fine. और newspaper जो भी आप पढ़ रहे हो आज से करना पड़ेगा शुरू. If you want to succeed. And trust me, verbal is one area, especially for engineers, जिसमें improvement करना बहुत important है. ठीक है. Fine. Second thing is stop backtracking. I don't know if you have done that, but everyone does that once in a paragraph. कि तुम पढ़ते पढ़ते भूल गए क्या लिखा था, फिर दोबारा से पैराग्राफ पढ़ा. How many of you did that today? So almost 50% of people at least have to read once again. So very good strategy to stop that is using your finger. कि जहाँ तुम पढ़ते आ रहे हो साथ साथ में फिंगर लेके चलो, सो दैट यू डोंट डाइग्रेस फ्रॉम द लाइन नंबर 1 पे लाइन नंबर 4 पे आगे 5 पे चलेंगे.
The only problem is कि online में you can't use the finger. So online में you have a mouse, so you can use your mouse to track the words. तुम कहाँ जा रहे हो? Are you with me? Again, you see that 50% लोगों ने आज किया ऐसा. Fine. So these were the two problems which we have normally when we are reading. Now I'll move to the third part, which is improving speed. ठीक है, अभी तक का था how to avoid this problem. Now we'll go to the third part, we will how to increase the speed. Next strategy is a very very important strategy. It's called peripheral vision. Peripheral vision means there are some words, always there are some words which are not required to be read or not required to be understood. For example, if I'm reading the first paragraph, soft-bodied animal like caterpillar often fall prey. Often fall prey can be combined together as one simple word rather than just चार वर्ड नहीं, एक ही वर्ड है. अगर often fall निकाल भी जाए, caterpillar prey, तो obviously मतलब they fall prey. Understood? Fine. Same here. Voracious hunters like birds or reptiles. Again, these two words can be clubbed as a one word. Are you getting me? So what I'm doing is I'm trying to reduce the size of the paragraph by combining all the words which were together. So while reading you will feel that some words always come together. So you run through them. Are you with me? Fine. So how to identify? Fine. One big strategy to improve your speed is peripheral vision. Peripheral vision क्या बोलते हैं? There are always some words which can be combined together. Fine. Which will save your time. For example, when you are reading this paragraph, soft-bodied animal like caterpillar, I read slowly, often fall prey, suddenly come together as a very fast word. When you're reading, you feel that. Suddenly some word come together very fast. Okay, all these words I need, soft-bodied animal, caterpillar, often fall prey. Are you with me? Fine. Then you always will find some word which come together or which can easily club together as one word. So we'll be identifying those kind of words to increase speed. Okay, so we'll do that now. Is basically whenever you read a paragraph for a practice, reduce the paragraph into 3 sections. You will do that. So we'll start with one more RC now. Pick up any passage. उसमें बीच में 2 लाइनें डाल दो. Divide to 1/3. So you'll see that 1/3 of the passage is always same. और you don't need to run through them. ठीक है, कोई भी एक पैसेज लो, उसके बीच में 2 लाइनें डाल दो, ऑटोमेटिकली यू आर ब्रेकिंग द पैराग्राफ इनटू 3 वर्ड्स. ऑटोमेटिकली यू आर ब्रेकिंग द पैसेज इनटू 3 वर्ड्स. अपने आप 3 वर्ड अपने आप आ गया. तो वो 3 वर्ड में कैन यू रिड्यूस योर स्पीड, कैन यू सी सम वर्ड विच कुड हैव बीन रन फास्टर. करके देखो एक बार. ट्रस्ट मी इज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी. मैं समझा. What we're doing, I'm trying to read the words together. Soft-bodied animals, ठीक है, ये तो together आएगा. Like caterpillars, often fall prey. Often fall prey, I can run through them. ठीक है. Caterpillar, animal, I have to read the word. Fine. Often fall prey is very fast. I can read very fast. तो ऐसे से तुम्हारा एक 3-3, 4-4 वर्ड का एक ग्रुप अपने आप बनता जाएगा, where you can reduce the speed. Alright. So try to find out if you can find out any kind of a words. And trust me, ये घर जाके एक बार ट्राई करना. It's a very very effective strategy where I divide my passage into parts. Alright, how to practice? The best way is newspaper. If you look at a newspaper, automatically your newspaper columns are 3 to 5 words in one paragraph. Automatically they are made 3 to 5 words. So automatically you will find them. They're already given you in the paragraph the way we want, the छोटा paragraph. Are you with me? Fine. So आज के बाद तुम मैथ्स पढ़ो ना पढ़ो, लॉजिक पढ़ो ना पढ़ो, बट एवरी डे यू टू स्पेंड एटलीस्ट 30 minutes ऑन रीडिंग न्यूज़ पेपर. दैट विल हेल्प यू आउट इंक्रीजिंग योर GK, दैट विल हेल्प यू आउट इन योर vocab, दैट विल हेल्प यू आउट इन योर स्पीड. फाइन. So this thing will help you out in every way. Especially engineers. Engineers का मैथ्स हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है, इंग्लिश हमेशा वीक होता है. So you have to start now with your verbal. ठीक है. Trust me, verb is always coding. मैथ्स में यू टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन, हर एक का आंसर निकालना ही पड़ेगा, तभी तुम मार्क कर पाओगे. इंग्लिश में क्या है कि इट्स 30 सेकंड का जॉब. ठीक है. whoever is strong in RC, they will have no problem in CAT, they will have no problem in CET. क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि CET का वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम इज RC, बिकॉज RC में टाइम वेस्ट होता है. If you can increase your speed to double, at least 1.5 times, you can save a lot of time.
Alright. So this newspaper is a very good habit to do that thing. Okay, because already उसमें part में दिया होगा. If I look at the first line here, I don't know if you can read this, but there are only 1, 2, 3, 4, 5 words. तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे 5 वर्ड में आ जाएगा. We can easily break them or how to club them together or read your speed faster. So उसी स्पीड से पढ़ना पड़ेगा. नहीं, स्पीड इंक्रीज कैसे होगा? बिकॉज सम वर्ड्स आर टुगेदर, सम वर्ड्स आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर, सो यू रन थ्रू देम, तो ऑटोमेटिकली स्पीड इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, तो दैट्स द एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रेटजी. Alright, don't jump on Twitter. There's a very common advice which people on forums where you will find that कि start with हिंदू का editorial. ठीक है, हिंदू न्यूज़पेपर का editorial is the most difficult to read. और then you are jumping onto that one first. Avoid it. Fine. Start with easy newspaper. जो भी तुम्हारे घर पेपर आ रहा है इंग्लिश वाला, नॉट मराठी पेपर, फाइन, उसका पेज 1 से शुरू करो बिकॉज पेज 1 का लैंग्वेज इज ऑलवेज ईजी. ठीक है, आफ्टर कपल ऑफ डेज देन मूव ऑन टू द एडिटोरियल पेज. डोंट जंप ऑन टू एडिटोरियल डायरेक्टली, तो एडिटोरियल थोड़ा टफ होता है. ठीक है, सो एंड दिस एनी बुक एनी न्यूज़पेपर विल ऑटोमेटिकली डिवाइड योर पैसेज इनटू छोटा छोटा लाइन्स विच विल इजीली रीड. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट इज स्किम एंड स्कैन. स्किम एंड स्कैन मतलब अवॉइड दोज वर्ड्स विच आर यूजलेस और नॉन वैल्यू एडिंग. फॉर एग्जाम्पल इन दिस पैराग्राफ, सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स like was the waste of time. Caterpillars often fall prey, voracious hunters, birds or reptiles. ठीक है, what I'm doing is rather than reading the full paragraph, I'm reading all the main parts. ठीक है, suppose if I just read things, soft bodied animals, caterpillar, like तुम्हारे दिमाग में अपने आप आ गए, don't even need to read that word. Fall prey to voracious hunters, बर्ड रेप्टाइल. इसका मतलब कि जो तुम्हारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स है, सॉफ्ट वाले, जिनको खाने में बहुत मज़ा आता है, बर्ड्स को और रेप्टाइल्स को, दे ऑफन फॉल प्रे. ठीक है, बाय यूजिंग द कीवर्ड्स आई रिड्यूस माय टाइम टू हाफ. फाइन, दिस थिंग, सो दिस वाज द फर्स्ट पैराग्राफ. आई विल मार्क डाउन ऑल द वर्ड्स व्हिच कुड हैव बीन अवॉइडेड. एट ऑल्टीट्यूड ओवर 2500 meters, हिमालयस. I don't need to read in the Himalayas. तो हिमालय आ गया, ऑब्वियसली 2500 मीटर अबव ही हिमालय में होगा. Alright. Now this was the first second paragraph जो हमने स्टार्टिंग में देखा था. इसमें भी all these words which contain numbers 85%, 60%, 200 RPM, do not read these words. पढ़ लो कि कुछ नंबर था, इतना नंबर था, बात की बात है. फाइन, बिकॉज एनी वे अगर क्वेश्चन में आ गया व्हाट वाज द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द फर्स्ट लाइन, एनी वे हैव टू रीड अगेन, तो अभी पढ़ के क्या फायदा चलेगा. सो वेन एवर यू आर रीडिंग अ पैराग्राफ इन एन आरसी एंड देयर द नंबर, उसको अंडरलाइन करके आगे चले जाओ, उसको याद मत करो बिकॉज तुम्हें याद नहीं रहने वाला. इट्स इम्पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल दीज वर्ड्स. सो रन थ्रू देम. व्हेन यू रीड द क्वेश्चन अगेन यू कैन कम बैक. ठीक है, सो डोंट पुट टू मच स्ट्रेस ऑन द वर्ड्स. ठीक है, हिस्टोरिकली टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द रीडिंग थिंग. फाइन, दैट इज आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ योर वर्कशॉप. लेटर ऑन वील अंडरस्टैंड कि ऑथर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द पैराग्राफ. ठीक है, आई एम डूइंग द फर्स्ट पार्ट, सो विल वर्क ऑन द रीडिंग. आगे जाके व्हेन वी गो टू एडवांस लेवल, योर ऐसे में आरसी में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं देयर विल नॉट बी एनी क्वेश्चन विच टॉक्स अबाउट कि बुक्स है कि मैगजीन है कि न्यूज़पेपर्स है. द क्वेश्चन विल बी ऑथर की टोन कैसी है, ऑथर गुस्से में है, ऑथर प्यार से बोल रहा है. सो मतलब योर फोकस विल मूव फ्रॉम द पैसेज टू ऑथर. दैट इज द थर्ड फेज. बहुत दूर की बात है अभी के लिए. अभी के लिए लेट्स ट्राई टू रीड द पैराग्राफ और लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉकिंग अबाउट. ठीक है, सो दैट वाज द नेक्स्ट पार्ट विच वाज स्किम एंड स्कैन थिंग. अवॉइड द एवरी वर्ड, रीड ऑल द मेन वर्ड्स एंड रन थ्रू देम. ठीक है, Z method is a very good method again. I personally don't follow the method, but that's a very good zigzag method. Fine. Z method क्या बोलता है कि your brain is very very potent or is much more intelligent than what you think you are in your subconscious mind. Fine. So according to the Z strategy, instead of reading every line like we do in our reading, Z strategy says that you have to read every third line.
First you start from here, read this line, then directly go to like this, then read third line, then just browse through the fourth line, read 5 line, sixth line, 7 line. समझा? पहला line पढ़ो, then you are reading ulta to the second line, or just browsing through the line number 2. Then again third line, seriously, fast track fourth line, fifth line, sixth line. एक बार try. Let's try this once. Alright, so we'll try to do that once. If this works, it will be great for you. Soft body animals like caterpillar often for prey. Voracious hunter में लाइन छोड़ के हम सीधा मूविंग ऑन थर्ड लाइन. वो लाइन ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में छप जाएगी. लाइन देखना तो है ना तुम्हें. You're not jumping on to third line सीधा. तुम सेकंड लाइन को सिर्फ देख रहे हो, ब्राउज थ्रू कर रहे हो. पहला लाइन पढ़ा अच्छे से, दूसरा लाइन को ब्राउज कर लिया. सॉफ्ट बॉडी एनिमल लाइक कैटरपिलर ऑफन फॉल प्रे. प्रे मतलब उसके मरने वाला आज. ठीक है, अगली लाइन हंटर्स बर्ड रेप्टाइल आ गया. ठीक है, हैविंग नो मीन्स ऑफ एक्टिवली डिफेंड देमसेल्फ. उनके पास कोई चारा ही नहीं बचने के लिए. विद अ वेपन लाइक क्लॉज एंड. तो सेकेंड लाइन अपने आप ऑटोमेटिकली कैन बी डिड्यूस फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ. ठीक है, सेल्फ स्ट्रेटजी इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ बिकॉज यू जस्ट अ बिगिनर, बट एक ग्रेजुअली जाके तुम्हारी हेल्प कर सकती है आगे जाके. ठीक है, फाइन. सो दैट्स वन एग्जाम्पल वेयर यू आर रीडिंग लाइक दिस एंड देन Z shape. ठीक है, if you can just read the thing, एक बार I'll pause it and just read through the passage one. Try to use a Z strategy. घर जाके अपन बाद में देखेंगे अच्छे से. Just try to run through this and see if it makes any sense. So I'll pause here. Fine. This strategy is little bit advanced level. It's not for the beginners. तो आज आपको समझ नहीं आएगा शायद, लेकिन gradually जाके once you are getting the habit of reading, you will get to know. Fine. So ideal way to start reading is your editorials. Newspaper का editorial board आता है. From number 1 line to last line will take you 1 hour to read. आज की date में. So when I started reading Times of India editorial, it took me 1 hour. But today it takes me 20 minutes to read from A to Z. Only because of practice. यार, if you start running, तुम अगर भागना चाहो तो you will not be able to run more than 100 meter, 200 meter. But gradually, if you are running 200 meter every day, one day you can run for 1 kilometer. Yes. Swimming का same case. Swimming अगर तुम जाओ तो you can't even swim for 20 meters. Even though you are a good swimmer, but daily practice करने के बाद ही आएगा. Fine. So मैथ्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इज योर रीडिंग, बिकॉज मैथ्स करने के लिए तुमको पढ़ना ही पड़ेगा. तो रीडिंग इज अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग, एवरी क्वेश्चन यू डू. फाइन. अगर CET का एग्जाम्पल लिया जाए, 200 क्वेश्चन आएगा, 200 में से 200 क्वेश्चन यू टू रीड. ठीक है, so it's very important to start reading from now. Last thing is application. There are a lot of applications on your phone, Android or application which you can download and start reading in the trains and everything. There are a few software which you can set your speed. कि my speed is 200 RPM. वो अपने आप टेक्स्ट को 200 RPM की स्पीड पे मूव करता जाएगा. So to read as fast as you can. Fine. So just search on your phone. अभी नहीं, बाद में, कि एप्लीकेशन कौन सी एप्लीकेशन. नॉट एप्लीकेशन. वन थिंग विच आई नो is called Rocket Reading. I don't know about this application, but it's a software for your computer. तो सॉफ्टवेयर और ऑफिस का वो भी आएगा, ऐप भी होगा. ठीक है. So it's a very good idea to do that because you can read on your trains, on your buses, on your car में मत देखना बस. If you're driving, don't read the apps. ठीक है, otherwise it will be very helpful. ठीक है. So what we done is we done with the speed का method. A method was vocalizing. Do not speak, just read. Fine. And we saw that class में 40% of people were doing that. Number 2, do not stop backtracking. So use your marker or pen or something to make sure that where you are. You can use your finger, you can use your pen. Fine. Almost 50% people in this class were doing that. Third was the peripheral vision. Rather than reading the complete word by word, read sentence by sentence. जो हमने पहले देखा था, 4 वर्ड्स को एक साथ बोलो, एक साथ पढ़ो. So they can improve my speed. ठीक है. Fourth was skim and scan. Fifth one we did advanced strategy called Z method. Last is all about practice through various apps. ठीक है.
Alright, so now I'll go back to do the same test again. I'll be surprised to see the improvement in your scores, improvement in your word count. And again, I want you to follow those strategies. जो जो तुमने गलतियाँ पहले की थी, अब ये गलती ना हो. Alright, so time start now. 30 seconds. जो जो के फालतू के वर्ड छोड़ते जाओ, जहाँ जहाँ पे स्पिन करते स्पिन करो, इतने वर्ड कंबाइन करो, यूज द स्ट्रेटजी. ऑलराइट, स्टॉप. हो गया पूरा. So it took me, now your speed is 250, so it took me not more than half an hour to increase your word count from 200 to 250. That's the beauty of this class today. Fine, so we'll take the number 2 test. So again, second test, please read the passage. The time start now. Alright, stop. Okay, पूरा. Did you read the 85%, 65%? अगर तुम वही निकाल दोगे तो टेंशन ही खत्म हो गया. So obviously your and this passage was comparatively more easier than the first paragraph. The words were easier than the first paragraph. You were taking earlier more time because of these words, but the moment you remove them from your life, life becomes simple. Okay. That's the beauty of your word power. Fine. So 300 plus, we just saw it. 300 plus is a good number, but your target is 400. Fine. So at the start of this class, most of you were around 200, 150, 170 or 200, but now hopefully everyone is 250 plus. ठीक है, but रातों रात नहीं आएगा, it will take some time. अगर रातों रात स्पीड बढ़ती तो बात ही क्या थी. Then I would have been charging double the fees than what I am charging today. Alright, jokes apart, but it's a very good strategy. Fine. Please follow these strategies at home starting from today. तो आज से लेकर जब तक तुम्हारा एग्जाम है, daily 1 RC. Because if you're doing RC, you're doing everything else which is along with RC. उसके साथ बाकी सब कुछ कवर हो जाएगा. ठीक है. Fine. So in this workshop, I'm not taking any RC today. We're not solving any RC. But the objective is how to read faster. Fine. So RC is one of the good examples where you have to read anyways. And look at the books, your paragraph in front of you. You have to use 1 page to solve 5 questions. So तुमको speed बढ़ाना ही पड़ेगा. Correct.